हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बड़े होंगे। तो चलिए हमारी हॉगवर्ट्स लेगेसी दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल हम एक नए मिशन पर हैं। फिनिक्स बर्ड जो है उसकी खोज में हम निकल पड़े हैं। तो देखते हैं हमारे हैरी पॉटर को ये फिनिक्स बर्ड्स मिलता है कि नहीं। तो फिर देर किस बात की, चलिए गेम को शुरू करते हैं। ओके, फिनिक्स माउंटेन केव्स, एंटर इनटू द फिनिक्स माउंटेन केव्स। चलो तो एक सेकेंड टू सी। ओके तो चलो, तो इस माउंटेन केव का पता हमने रेक नहीं बताया है। और फिलहाल हमें जाना है अंदर। A blockade. Hogwarts poachers are already here. Revelio. वैसे ड्रेक ने हमें बताया था कि ये बर्ड एक्सटिंग्विश होने के कगार पर है, यानी इस दुनिया से लुप्त होने की कगार पर है। तो हमें उसे बचाना भी है और पकड़ना भी है, दोनों काम एक साथ करने ताकि हम उसको एक सुरक्षित जगह पर रख सके। पर क्या? ओके, बैग है। हाँ, ये गायब होने का जो मजा है ना, वो किसी और में नहीं, सच में। से आराम से आराम से आराम से आराम से मारेंगे हम, बहुत ही आराम से। Matter if they're still alive. Concentrate on what we'll be leaving with. Crap, mate. भाई घूमना मत, मैं पीछे आ रहा हूँ। नाइस। एक सेकंड, यहाँ पर और भी है। तो कितने लोग हैं यहाँ पर? अच्छा, एक दो अच्छा, 3 तो दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। भाई इतना आसान नहीं है इसके पास जाना। ये बंदा भाई तोड़ फोड़ करनी जरूरी है क्या गिरते वक्त? Protection charms, if you ask me. ये क्या देख रहा है? ये लगता है इससे पहले मारना चाहिए। भाई आगे और भी है। कम ऑन यार। एक सेकंड, पीछे को छूट रहा है मेरा। Lumos. अरे इमोल्सो नहीं रे मेरे भाई। More poachers. How many are there? मेरे मन में भी यही सवाल है। एक्चुअली ये लोग है कितने? Incendio. Confringo. Incendio. ओह, यहाँ पर डेड एंड है। मुझे लगा था यहाँ पर कुछ अंदर होगा। मकड़ी का जाला जो बनाया था ना उसने, मकड़ी ने। चलो कोई बात नहीं, जैसे हम आए हैं आगे जाना है।
हमारे पास ओके, ये तो काफ़ी सामान है यार। ये थंडर ब्रू जो पोशन है ना, इसकी सामग्री मेरे पास नहीं है यार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिट, मेरे पास स्पेल क्या है? ये क्या मैंने व्हाट द कौन कौन से स्पेल मैंने इकट्ठा करके रखे यार? ये ठीक है। ये येलो येलो एक साइड पे रखते हैं। एक ठीक है, रिगार्डिंग लेता का कोई काम नहीं है फिलहाल तो। चलो ये हो गया। ओके, अब मुझे ठीक लग रहा है। Lumos. यहाँ पर बहुत सारे हैं पोचर रेंजर्स। Where did I set my traps? Was it lower Hogsfield or upper Hogsfield? भाई वैसे भी ये खतरनाक भी है, इतना आसान नहीं। आराम से हैरी। एक तो गया। It's been ages since I found anything worth poaching near Cragcroft. घूमना मत। भाई एक साथ दोनों को मार सकता हूँ क्या मैं ऐसे यहाँ पर? ओहो! Your poaching days are over. Lumos. भाई किसी का बिना खून बहाए हम आराम से जा सकते हैं। वैसे लड़ाई झगड़ा हमारे हैरी को पसंद भी नहीं है। ये गियर फुल मेरा कब पीछा छोड़ेगा यार? कब पीछा छोड़ेगा मेरा? Revelio. ओके, यहाँ पर अलो मोरा। अरे अलो मोरा, कोई बात नहीं, चलो ये तो डायरेक्टली खुल गया। The Phoenix. लो हाँ। ये बहुत ही बड़े क्रिएचर है फिनिक्स। It almost seems as if it wants me to follow it. I need to find it before the poachers do. यस, इससे पहले हमें उसे पकड़ना होगा, इससे पहले वो पोचर्स उसे पकड़ ले। लेकिन एक सेकंड। रीच द पीक ऑफ द माउंटेन। ठीक है, रीच द पीक ऑफ द माउंटेन, लेकिन जाएंगे कैसे पीक ऑफ द माउंटेन? तो जाने का कुछ तो रास्ता होगा ना पीक पर। यहाँ से क्या इधर? हम यहीं से अंदर आए थे ना? हाँ यहीं से तो अंदर आए थे। यस।
इतनी बड़ी जो लैडर लगाई है ये मैंने देखी। ओह हो नो 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 नो। Expelliarmus! Let's get this over with, shall we? रुक जाओ रुक जाओ। Confringo! Defender! भाई ऐसे वक्त में आया मत करो यार प्लीज। यहाँ पर कोई है क्या आगे? गाइस थोड़ा एक सेकंड है। अरे यार यहाँ पर लेवल 3 का लॉक है। और अभी हमारे पास तो वो कैपेसिटी है ही नहीं हम लेवल 3 का लॉक ओपन कर सके। There it is again. कहाँ पर भैया हैरी कहाँ दिखा तुझे? Reparo. नहीं यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। यहाँ पर कूद के ही जाना पड़ेगा। अरे पानी है क्या? चल भाई हैरी जल्दी चढ़ जा। Incendio! इसके अंदर कुछ, चलो यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा मिला नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी खोज तो जारी रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ओह यहाँ पर स्पाइडर्स है। मुझे लगता है यहाँ पर घमासान हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं। वो स्पाइडर्स देख के मुझे यार कुछ अजीब सी फीलिंग आती है यार, पता नहीं क्यों। Confringo! Bombarda! Expelliarmus! Incendio! Flipendo! Descendo! Defender! Not my fault you're a deadly great spider. यस, ये हमारा फॉल्ट नहीं है, तुम हमसे उलझ चुके हो और हैरी से उलझना इतना आसान नहीं है। Flipendo! Descendo! Bombarda! धीरे धीरे हैरी की प्रैक्टिस भी बढ़ रही है, अच्छी बात है। दो तीन स्पेल में स्पाइडर का काम तमाम हो रहा है। और एक है, कहाँ पर है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये। और एक Revelio! और एक है यहाँ पर स्पाइडर। ये कहाँ है? ऊपर है शायद, ऊपर ही होगा। अरे अरे ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा हैरी, ऊपर चढ़ जा। Well, it isn't a little hypocrite. You're not. Protego! Stupid one! Perfect. Target practice. टारगेट प्रैक्टिस, ओके। Incendio! Descendo! Expelliarmus! Oh, what's the light go out of your eyes? ये बहुत सारे यार। Bombarda! Defender! Expelliarmus! Real quick, son.
go down easy. Repulsor. Confringo. Leviosa. I ain't been on one. Leviosa. Leviosa. अबे तेरे लेवियोसा की रुक साले। Descendo. Rebellion. Expelliarmus. Repulsor. Rependo. Defender. That was for High Wing. The beasts around here can sleep a bit easier now. चलो, यह का काम तो तमाम हो गया। यार इस गेम की यही यार मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी यार, इन्हें जो गियर स्लॉट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए था, या फिर जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ती है ना वो थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए था। ये क्या करना पड़ता है बार बार, जो हम क्लॉथ्स हैट्स जो गियर्स हमें जो मिलते हैं ना वो हमें बेचना पड़ता है बार बार। और बार बार उसे बेचने के लिए जाना पड़ता है सच में। वैसे गेम काफी बड़े है, ग्राफिक्स काफी बड़े है, लेकिन ये एक छोटी सी चीज है ना। हाँ कुछ लोग बोलेंगे कि मर्लिन ट्राइज करके अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा अपग्रेड नहीं होता इतना जितना चाहिए। क्या फायदा है इसका यार। Expelliarmus. Confringo. अरे हमारा फिनिक्स कहाँ गया? और कितना ऊपर जाना पड़ेगा उसको ढूंढने के लिए? भाई हमने छाना है गुफा का कोना कोना। लेकिन अभी भी फिलहाल हम फिनिश के लिए पड़ रहा है हमको रोना। अच्छा अच्छा मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ऊपर है ऊपर 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 है। न्यू बेस इन्वेंटरी अनलॉक स्लॉट्स अनलॉक्ड। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। To help. I can take you somewhere safe. Levioso! Arresto momentum. Yeah, आसानी से आ गया। Let's get you back to the room. Deke's going to be pleased. ये बहुत आसानी से आ गया। मुझे लगा था इतनी आसानी से ये आएगा नहीं। चलो फिलहाल यहाँ पर तो अपना काम पूरा हो चुका है। हमने फिनिक्स को पकड़ लिया है। ये बहुत ही रेयर और रेयरेस्ट बीस्ट है। चलो एग्जिट चलते हैं हमारे रूम में। रूम पर रिक्वायरमेंट में। This looks intriguing. वापस नहीं जा सकते। एक तरफ से एंट्री एक तरफ से हमें एग्जिट करना है। हम है कहाँ पहले? हम है कहाँ पर अभी?
आओ, ये तो काफी दूर है। हमें जाना है रूम ऑफ रिक्वायरमेंट में। ओके Did you find the phoenix? Yes, Deke. yes And I rescued it from the poachers. I have it here. It's safe. Remarkable! Well, what are you waiting for? Deke cannot wait to... बैग में हिल रहा है यार ये। My heavens! ओ What a beauty! You keep it close. Professor Weasley and Deke were right to tell you about the Room of Requirement. Look at all you've done, and how many beasts you've rescued. A phoenix is safe now, because of you. I couldn't have done it without your help, Deke. Thank you. Deke is grateful for the kind word. Helping you do such good for so many beasts has given... Deke will always be here for you when you need him. चलो कंप्लीट साइड रिलेटिंग क्विस्ट चैलेंज कंप्लीटेड मूव्स और फिनिक्स फेदर। ये कहाँ पर गया ये? एक सेकंड मुझे देख लेने दो। अच्छा यहाँ पर ऊपर गया ना ये? पहले मुझे देख लेने दो। कहाँ पर है? ओ हो। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे प्लीज यार रुक जाओ। थोड़ा सा वक्त बिताना है तुम्हारे साथ, रुक जाओ भाई। चलो एक वन ऑफ द रेयरेस्ट जानवर हमें यहाँ पर मिल गया। इसको क्या प्यार हो गया क्या हमसे? चलो भाई, तो फिनिक्स तुम मजे लो अपने नए घर का। और अब मुझे जाना है सेबेस्टियन से मिलने। पता नहीं उसने क्या गड़बड़ कर दी यार, लेकिन उस गड़बड़ से भी पहले हमको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खतरनाक स्पेल सीखना है। वो शायद सेबेस्टियन नहीं सिखा सकता है हमें, एक डार्क स्पेल। तो चलो हम चलते हैं फिलहाल सेबेस्टियन के पास, क्योंकि अगले मिशन के लिए वो डार्क स्पेल बहुत ही जरूरी है। कहाँ से बाहर जाना है? अच्छा यहाँ से, ओके। I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Sounds perfect. ये थोड़ा सा चेंज, डेकोरेशन, लाइट्स ठीक ने हमारे लिए कर दिए हैं। चलो
और गाइस यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत ये देखो, ये पोशंस टेबल हैं, ये पोशंस, ये पोशंस। यहाँ पर मैं पोशंस बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये थंडर ब्रू पोशन बनाने के लिए मेरे पास एक इंग्रेडिएंट्स कमी है, और फोकस पोशन के लिए भी। तो चलो, और यहाँ पर हमने कुछ प्लांट्स उगाए। ये देखो, ये मैंड्रैक, मार्शमेलो लीव्स, ये भी मैंड्रैक है। सीड्स, म्यून्स, चलो ये देखो, ये सारे प्लांट्स ये आगे फाइट में हमारे काम आएंगे। फिलहाल चलते हैं सेबेस्टियन की तरफ। सेबेस्टियन ब्लैक में, ठीक है। द हाउस ऑफ कॉल, टॉक टू पपी। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूँ कि ओके, सेबेस्टियन की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत ही खतरनाक डार्क स्पेल सीखने को मिलेगा, क्रूसियो। ये कहाँ पर है? ये सेबेस्टियन पता नहीं कहाँ पर जाता है यार। अच्छा, हॉगवर्ट्स में भी है। अच्छा, बहुत अच्छा है। मुझे लगा सेबेस्टियन किसी बाहर जंगल में मिलेगा हमें। पहली बार हॉगवर्ट्स नहीं, दूसरी बार हॉगवर्ट्स में मिल रहा है। हमेशा बाहर है, किसी जंगल में, कहीं खुफिया जगह पे। चलो, फिलहाल तो रात का टाइम है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, ये सेबेस्टियन के सारे काम रात में ही क्यों होते हैं? अब ऐसे वो डार्क स्पेल्स की वो ऐसी प्रैक्टिस ही करता रहता है, वो तो दिन में कर नहीं सकता। अरे सो जाओ, रात हो गई है। ये कहाँ पर है? Revelio. भाई, ये जो चेस्ट तुम देख रहे हो, इसके ऊपर आई बना हुआ है। मुझे लगता है इसको ऐसे ही खोला जा सकता है। भाई, हम गायब भी हो सकते हैं। इतना आसान नहीं बेवकूफ बनाना हमें। चलो, सेबेस्टियन का वेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो आ गया। You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. चलो, हमें इसके पास चलना है। He's हमें this way. इन द shadow of the study. Quiz start. चलो। Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. आगे, अच्छा यहाँ पर है। There he is. Good luck.
Speak with Ominous. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells to try and catch up to the other 5th years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about, what was it, a scriptorium? He told you about that? He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is best left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my fate. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to... She'd heard of this scriptorium and thought it's... She wrote regularly to my father about her... I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened? Aunt Noctua went down this path. You don't know that history will repeat itself. Besides, get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. I see what you've done here. And very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. I hope we don't regret this. Opens list Sebastian! door. Over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? Incendio! You didn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Revelio! The entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads Incendio! than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Ouch. ये एक साथ करना है क्या? ओके मैं इसको कैसे करूंगा? Confringo! Something's happening. I hope we're ready for this. ये खुफिया दरवाजा खुल गया. चलो. Dark, ominous corridors. My favorite. ये No नाक comment. नाक शक्ति का Come on, that was a खुफिया good टाइम- one. शायद यहाँ पर क्या है? Revelio! Looks like a locked door. We may want to look around. ओके ये किसी का नोट है. A journal entry. Signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was... Repair her. She was my aunt. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. ये नाक शक्ति का गुप्त चेंबर है. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths ओके ये are स्नेक्स descended की from भाषा समझ भी Salazar सकता है और Slytherin. बोल भी सकता I'd है. like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us, Never mind. Revelio! No way forward. like a maze.
Salazar Slytherin you wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. ओके, सारे गेट्स के पास हमें क्लूज के लिए देखना है. The dial requires focus. Aunt Noctua said the same. It may take practice to solve it. अच्छा, ये पजल है किसी तरह का. Slithers, rock. अरे यार, इसे सॉल्व कैसे करना है लेकिन. कोई सांप तो देखो, उस ऐसा फन वाला खड़ा है यार. हाँ, Revelio. नहीं, मुझे लगता है उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए. ये देखो, अगर डोर ओपन करना है तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. लेकिन इसका जो कोड है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा यार. Revelio. इसको सॉल्व कैसे करूं मैं. ये गेट खुल जाएगा उसके बाद, ठीक है. इसे सॉल्व करूंगा तो. यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए जो मुझे हिंट दे सके. यहाँ पर इसको कैसे मैं क्लियर करूँ. अच्छा, शायद ये हिंट है. अच्छा, इसके ऊपर मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार. ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला सिंबल, ठीक है. ओके, सो ये सिंबल दरवाजे पे ही बने हुए हैं. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Revelio. ये किस दरवाजे का सिंबल है. ये दरवाजा तो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे. ये शायद इसी दरवाजे का होगा. ये तो ओपन है ना, लेकिन ठीक है. ये जो खुला दरवाजा है, हम उसके अंदर जाते हैं पहले. Lumos. और ये टॉर्च किस दिन काम आएगी हमारे. तो यहाँ पर नोट है. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. Incendio. Person in the world. Lumos. यहाँ पर एक लॉक है, लेकिन ये कौन से दरवाजे को खोलता है. तो ये तो पूरा बुलबुला ही है. यहाँ का दरवाजा खुल गया.
ये कुछ निशान है लेकिन ये कुछ मिटा हुआ सा है यार, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, यहाँ पर एक सेकंड देख लेता हूँ, यहाँ पर है क्या? Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look in a mirror, Sebastian. ओके, और एक गेट खुल गया, चलो। That sounded promising. Look, another dial solved. Impressive. Nice work. भाई बचपन से हम होशियार है यार, इसलिए तो सीधे 5th क्लास में हमारी एंट्री हुई है। Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. जरा एक सेकंड है, All I heard. ये मेरा गेयर स्लॉट मुझे लगता है कुछ खाली करना पड़ेगा। यार गेयर स्लॉट है ना, अरे डिस्ट्रॉय हो जा। ओके, एक यही प्रॉब्लम इस गेम में। Quidditch clothes, ओह नाइस, Quidditch We've got clothes। more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. ये दरवाजे पे जो सिंबल बने हुए ना, वैसे हमें उस लॉक में बनाना है ताकि ये दरवाजा खुल सके, लेकिन इसका लॉक है कहाँ? ओके, ये कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये सेकंड सिंबल क्या है? क्या और एक सिंबल मैंने यहाँ पर देखा था कहीं पर, देखा था मैंने ये सिंबल, और एक था वो यहीं पर था क्या? शायद यहीं पर था। Another welcoming sword, was he? ये एक और सेकंड वाला कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था ना मेरे ख्याल से। ओके, हो गया। Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. यार एक क्रूसियो सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? ये नाग शक्ति के सीक्रेट चैम्बर में हम घुस चुके हैं, Lumos. क्योंकि डार्क मैजिक अगर सीखना है तो शायद नाग शक्ति से हाथ मिलाना पड़ेगा। आ गई है, रुक जाओ यार। अरे I मेरे spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. भाई कुछ अजीब है, कुछ तो अजीब है। The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not ये yet देखो यहाँ पर finished with लिखा है us. क्रूसियो। Ouch. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. Revelio. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. Dr. Sebastian, okay. You said you know what to do. Tortured faces on the door and crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? चलो हमें यहाँ He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided.
ओके, अब क्रूसियो के बारे में ओमिनस से हमें बात करनी पड़ेगी। Ominous. I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spell's the reason I have. कोई भाषण बनकर If सिखाना you चाहते हैं कि नहीं? cast Crucio, you will regret it forever. ये तो ओमिनस की बात माने तो क्रूसियो अगर हम इस्तेमाल करते तो इतना आसान नहीं होगा। What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. नहीं, मुझे क्रूसियो सीखना है। I want to learn Crucio curse, but you must cast it. Teach me the Crucio curse and I will cast it on you. हाँ, नहीं, कुछ तो चूज करना पड़ेगा यार। I want to learn the Crucio curse, but you must cast it on me. यार क्या चूज करूँ इसमें से? अगर उसे बोलता हूँ मुझे सिखाओ क्रूसियो कर्स तो फिर मुझे सेबेस्टियन पे कास्ट करना पड़ेगा वो। ठीक है, एक काम करके देखता हूँ। I want to learn the curse, and I think it's best if I cast it on you. Very well, if that's what you want. To perform the spell, raise your wand, point it at me, and firmly declare Crucio. Hold on as long as you can. ये कुछ भयानक सा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सेबेस्टियन पे मैं एक क्रूसियो कास्ट करूं। यार ये बहुत ही कठिन डिसीजन है मेरे लिए। Ready? I'm ready. नहीं हैरी प्लीज यार, वो हमारा फ्रेंड है। Oh shit, man. Are you all right? That pain. I would have done anything to make it stop. But I'll survive. Let's keep moving. चलो, सेबेस्टियन made बहुत it. स्ट्रांग बंदा है, We सर्वाइव कर found दिया। Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. ये है क्रूसियो जो हमने अभी भी सीखा है। ये एक दो स्पेल जो डार्क मैजिक में आते हैं वो सीखना बाकी है। ये देखो, ये इम्पेरियो अनफॉरगिवेबल कर्स और ये सबसे खतरनाक एवडा कैडबरा। अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सचिन बरनास। एक सेकंड में इसे इक्विप कर देता हूँ पहले। ओके सर, ठीक है, ये किसी तरह का स्क्रिप्चर है वो हमें लाइथरेंस स्पेल बुक। Sebastian,
Ominous. There's a book just here. You found something. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. अरे अरे ओमिनस की फट रही है क्या हमारे साथ आने के लिए? Cool, bro. What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. Revelio! I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. हाँ, इतना आसान नहीं था, ये बात तो सच है। यहाँ पर कुछ अच्छा यहाँ पर है। I see a way out. Best news I've heard all day. रुक जाओ मिनस, हम यहाँ से बाहर निकलने वाली है। भाई थोड़ा सा पानी पी लो, प्यास लगी है मुझे। यहाँ पर किसी फिल्म Revelio! हाँ यही ढूंढ रहा था मैं यार, फिल्म गाइड। क्योंकि अंदर आते होते मैंने इसे देख लिया था। इधर ट्रैवल करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें नाक शक्ति चूज करनी चाहिए थी। Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. With the shot of the study quiz complete. चलो, वैसे हमारे इस गेम में शायद सिर्फ 3 ही ऐसे स्पेल है जो डार्क मैजिक स्पेल है। इनमें से एक अभी हमने सीख लिया है, लूसियो, ये दूसरा इम्पेरियो, दूसरा शायद सबसे खतरनाक आप जानते ही होंगे एवेडा कैडेवरा का यूज करती में एक ही शॉट में वही पर मर। और ये स्पेल यूज करना शायद प्रतिबंधित है। सीधा फास्ट ट्रैवल करेंगे यहाँ पर। तो फिलहाल हम चलते हैं पॉपी की तरफ। देखो ये जो मेन मिशन है लॉर्ड कैक्स लॉयलिटी, या हमारा जो गॉबलिन है जो हमारे साथ है, जो हमारा फ्रेंड है, वो आगे बढ़ चुका है लड़ने के लिए अदर गॉबलिन्स से। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम उसकी हेल्प करने जाने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि हम सारे स्पेल्स जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इकट्ठा करें, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि ये छोटे मोटे फाइट होने वाले हैं नहीं। तो ठीक है, तो फिलहाल पॉपी क्या कहती है, हम शायद उस क्विज को ट्रैक करते हैं। वैसे पॉपी के साथ मिलकर हमने ड्रैगन को बचाया था, आपको याद होगा जरूर। तो यहाँ पर सीधा फास्ट ट्रैवल करते हैं।
good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she alright? She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's alright. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget. I take it you aren't going to let the poachers in. Gran wants me to stay out of it. But we had the element of surprise on our side when we saved that dragon. But the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who... Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! Sounds as if we need to go and talk... We'll need to be careful in how we approach them. Still, I think they may... I'll let you know as soon as I have a plan. I hate to see it. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. These rocks have seen better days. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. We must gather information from the friends of Mr. Bickle. That's Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. And as my mother would never go near the Hog's Head, she is like... Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Glad you came. Mrs. Rabe should be nearby. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. Poor Joanna and little Archie. And now... What do you mean? Why?
I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him... And you declined? Of course I declined. The note stated that I only had a few days to reconsider, but the help Harlow wants is help that I cannot give. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us. I shall do all I can to get evidence again. Very well. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other two friends. Glad you came. I saw what you did! Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? I've nothing to say about him. Please, sir, I'd like to help. I spoke... You know the Bickles? All right. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What did he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Yours, I've been able to cover for his, but I can't keep it." Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to... As for Rosie's letter... Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. चलो एक लास्ट फ्रेंड है विकास का, उसके साथ हमें कुछ उससे पूछताछ करते हैं. अरे Agabus Filbert must be around here somewhere. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you. Tragic. But I feared Harlow's retaliation, and... If you had spoken out against him as Mr. Bickle asked, perhaps Harlow would be locked away by now. Perhaps. But... You said that Harlow committed an act... Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, as a surprise for her birthday, one day, Harlow, before I knew it, I'd been petrified. I watched helplessly. I was shaken to my... I imagine you fear Harlow retaliate. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. चलो अब नाटे के पास वापस चलना है. ये कुछ साइड मिशंस है जो करने शायद जरूरी है. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. अरे नैटी कहाँ चली गई? अभी तो यही थे ना. I'd rather straight.
कोई हटो हटो हटो, रास्ते से हटो सब। मुझे नैटी को ढूंढना है। Natty must be around here somewhere. अरे नैटी कहाँ चली गई? वो अपनी वॉन्ड यहीं पर छोड़ गई है। Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Revelio! भाई नैटे को ढूंढना पड़ेगा। इससे पहले वो किसी शायद मुश्किल में फंस जाए। ओके, नैटे के फुटप्रिंट यही हमें दिख रहे हैं। जैसे हम रेवले कास्ट करेंगे ना, नैटे के फुटप्रिंट हमें दिखेंगे। नाइस। ये यहाँ पर है, यहाँ पर अंदर। Nosy little students get what's coming to them. ये यहाँ पर आए हैं नैटी के फुटप्रिंट। Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. The footprints led to this room. There must be another way forward. ओके सो गाइस, हमें फिलहाल तो नैटी को ढूंढना पड़ेगा किसी भी हालत में। शायद वो किसी ट्रबल में है। तो आज की स्ट्रीम में यहीं तक स्टॉप कर दे जाओ। मैं मिलता हूँ आपको कल एक नए लाइव स्ट्रीम के साथ, और कल हम नैटी को फिर से ढूंढेंगे क्योंकि हमारी फ्रेंड शायद किसी मुश्किल में है। तो मैं मिलता हूँ आपको कल एक नए लाइव स्ट्रीम के साथ। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।